solve the other chapter concepts also, because we have not completed the subject in a total manner, because थोड़े concepts आने वाले concepts के भी link है, that's why that deficit is coming. Otherwise maximum कर सकते हैं सर, ये मेरा मानना है सर. ओके चलो देखिए, देखो सर, an insulated 5 meter cube rigid, देखो, and one more thing is insulated, contains air at 500 kilopascal 50. The valve connected to the tank is opened and air is, प्रभुदत्ता आप टेंशन मत लेना सर, मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस में आपका पूरा 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 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी. ठीक है सर, देखो नाउ the valve is open and the air is escaping, the pressure, देखो देखो एक कंटेनर था इधर, देखो सर, there is one container, यहां पे एक valve है, but please note down that it is an insulated container. इसमें there is air, देखो the fluid is air 500 kilopascal, and what is the temperature sir? 273 plus 57, 273 is 280. 280 means, can I write it as 330 Kelvin? Can I bolo sir 330? Okay, now the valve is opened and the air is allowed to escape. कब तक? Until the final pressure in the container is 200 kilopascal. Means when the valve is open, the gas is leaking out. देखो ये कौन सा सिचुएशन है सर? दिस इज अनस्टेडी केस सर, दिस इज अनस्टेडी स्टेट. बी केयरफुल, बी केयरफुल. द वॉल्व इज ओपन एंड द गैस इज लिविंग. द टेम्परेचर, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. द एयर टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज मेंटेन्ड कांस्टेंट बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. देखो देखो, so as the fluid is going, the temperature is changing, but the temperature is kept constant by electrical resistor. The magnitude of electrical energy supplied is so and so. The entropy change is so and so. ये सवाल पूछा है सर. चलो, shall we proceed sir? मैं मेरा ही फिगर ले लूंगा सर. This is a good figure. सर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया सर? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन सर? नहीं आ रहा सर आपको? मैं सवाल बताता हूं. देयर इज अ रिजिड टैंक. इस टैंक का वॉल्यूम इज 5 क्यूबिक मीटर, है ना सर? यस यस यस. कैसे करें सर? इज इट अ स्टेडी केस और अनस्टेडी केस? दिस इज डिस्चार्जिंग, सो इट इज अनस्टेडी स्टेट. तो क्या करेंगे सर? पहले एक सेकंड देखो. कैन वी कैलकुलेट द इनिशियल मास सर? Why your teacher has written the initial temperature is 330? Why I wrote the final temperature as 330? बताओ सर, रीजन बताओ. Clearly he said in the question the temperature is maintained constant. Now you tell me, as the inside temperature is kept constant with the help of electrical resistor, if I open this valve, at what temperature it exits sir? Same temperature. So exit temperature is not changing, and air is an ideal gas. When the exit enthalpy of an ideal gas is a function of temperature, H is equal to CPT. जब ये temperature change नहीं हो रहा, the one which is living, so exit enthalpy is also constant. क्या ये logic समझ में आया सर? Okay. Now, can I calculate the initial mass sir? चलो, calculate the initial mass. P1, it is 500. V1, it's a rigid container, the volume is not changing, by R is 0.287 and the temperature is 330. Can you give me the value of mass sir?
थोड़ा जल्दी दे दो सर। 26.396। ठीक है, अंडरस्टूड? यस। नाउ लुक एट केयरफुली, थोड़ा रिकलेक्ट कर लेना सर। क्या रिकलेक्ट कर लेना? आवर अनस्टेडी स्टेट, dm by dt in the control volume is equal to m dot I minus m dot E. At least you remember this equation, sir. At least you remember. Yes, sir. Look at, if I take this as the control volume, is there any mass entering this? No, there is only mass leaving. So therefore, m dot I is 0. No mass is entering. So my equation will take the form dm by dt in the control volume is equal to minus m dot E. Keep it in box. Next step is what? Next step is what, sir? Energy equation. du by dt in the control volume is m dot I hi plus q dot minus m dot E he minus w dot. ठीक है सर. No mass is entering, so mi will be 0. Insulated q is 0. Shall I write work 0? No. There is electrical energy input. There is electrical energy input. So du by dt in the control volume is equal to, this is put as 0 because it is insulated. As no mass is entering, mi entry is 0, तो ये दोनों 0. Minus, देखो एक सेकंड, minus he minus he into me. What is me, sir? me can be written as minus dm by dt in the control volume. नहीं आया सर आपको समझ में? दोबारा बता रहा हूं. Minus he minus, so already we have taken he me. What is me? me will be minus dm by dt in the control volume minus w dot. Excellent. ये मेरा इक्वेशन बन गया सर. अब क्या करेंगे सर? नाउ यू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. तो क्या होगा सर? देखो, सेम थिंग, बाय टाइम, वर्क बाय टाइम. सो टाइम, इट गेट्स कैंसल्ड व्हेन आई इंटीग्रेट. तो क्या होगा सर? du को ऐसा लिखेंगे, du इन द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस ऑफ माइनस प्लस dm डेल्टा m इन द कंट्रोल वॉल्यूम minus w. नहीं आया सर आपको? Please tell me, is it clear or not clear? If this is clear, I'll proceed. So I'm integrating this du by dt. dt गया integrate, by t गया, by t गया. So is this clear? अरे यार क्या हो रहा है? So it is the change in control volume. It is the change in the control volume. It is this. Understood or not, sir? अब we will take this and go to the next slide, sir. देखो एक सेकंड. Clear? No one is saying yes, sir. Yes, sir. No. अरे यार, यस. ना ऑब्जर्वियर, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जर्वियर कैसे करें सर इसको? सुनो ध्यान से. गुड क्वेश्चन सर, लेट्स नॉट नेग्लेक्ट दिस क्वेश्चन. कल आपको सताएगा ये. What are the changes in control volume, sir? In the control volume, initially we have taken as 1, and in the control volume, finally is taken as 2. So it is the change in internal energy.
So M2U2 minus M1U1 He into what is delta M, sir? Change in the control volume. Excellent, sir. So hope you have understood the construction of this equation. Actually, delta U CV means U2 minus U1, that is the change in the control volume. But small u is capital U by M, capital U is M into small u. So U2 is M2 U2, U1 is M1 U1. So change in the mass is M2 minus M1. This is the equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अनस्टेडी के साथ एंट्रोपी के आप फंस जाएंगे, बी केयरफुल सर. ओके, नाउ अभी डिफिकल्टी होगा सर. वेट 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 सर, फंस गए सर हम. M2, what is U2? CVT2. M1, U1 is CVT1. HE, CPTE. M2 is M2 ही लिखेंगे, M1 is M1 ही लिखेंगे, माइनस W. वेट सर, कैसे करें सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर. क्या समझ में नहीं आ रहा सर? कांट आई कैलकुलेट M2? देखो, P2V2 is equal to M2RT2. M2 will be equal to P2V2 by RT2. The final pressure is 200. देखो फाइनल, इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर चेंजिंग? नहीं, रिजिड है तो वॉल्यूम 5 ही होगा. R is 0.287 and the final temperature is 330 only. आप मुझे मास का वैल्यू बताइए सर. फाइनल मास 17.42. What was the initial mass, sir? Already we have calculated. Initial mass कितना था सर? 26.396. Yes. अब क्या दिक्कत है सर? Is it 10? ये गलत है सर? Is M2 वैल्यू गलत? Is M2 वैल्यू गलत? दत्ता वो प्रभु दत्ता. What is the value of M2? दत्ता. Put it here. Put it here. M2, 10.56. CV, it is air, 0.718. What is T2? 330. M1, 26.396. CV is 0.718. What is T1, sir? T1, 330 is equal to CP is 1.005. Can you tell me the value of T? देखो, TE is nothing but the exit temperature. So whatever the temperature is there, it is constant, it will live with the same temperature. देखो, so when the valve is open, inside whatever is the temperature, when the valve is open, inside whatever is there, it leaves. But the temperature is kept constant. At the same temperature, it leaves. So therefore, TE is 330. What is M2 minus M1? 10.56 minus M1 is 26.396 minus W. सर नहीं दिख रहा है सर, काहे को टेंशन लेते रहे आप? So I have substituted all values. Give me the answer, sir. मैंने पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. I want the value of W. It should be minus, sir. It should be minus, sir. क्वेश्चन नंबर क्या था सर? ये आई थिंक 24th ना? It is in this range 1498 to 1501. We got 1500 ना, तो ये ऑप्शन सही है सर. The magnitude of heat transfer is 12. This is wrong. So I think we are safe. आंसर तो आ गया सर. आंसर तो आ गया. Now stop. The question is not over. अब real problem अब शुरू हो रहा है सर. Now the real problem starts. क्या पूछा है सर? What is the entropy change? कोई बात नहीं सर.
2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, लेकिन कर लेंगे। इधर देखो सर, क्या ये सही है या गलत है सर? क्या ये सही है या गलत है सर? प्रभु दत्ता सेड रॉन्ग, बट वाई? सुनिए सर, सुनिए सर, always remember there is a transfer of entropy not only due to heat transfer but there is a transfer of entropy due to mass also. आपके टीचर ने एक ब्यूटीफुल इक्वेशन दे रखा है सर, दैट इज चेंजेस आर अकरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम। ये सही है सर, अब ये सही है सर, नो दिस इज करेक्ट सर, दिस इज फॉर ओपन सिस्टम। अब इसको जीरो पुट मत करना, आपको गोली से उड़ा देंगे सर। द क्वेश्चन वॉज वेरी इजी व्हेन दिस वॉज स्टेडी स्टेट, but now it is not the steady state. Do not put this as zero. If you put this zero, you are out of the race and लोग बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे आपको। बात तो सही है सर, हम तो मूर्ख नहीं है। एक बात बताओ सर, at least the construction of equation, I have given you the entropy change for open system. This is for open system. Understood sir? क्या कर सकते सर? ऑलरेडी यू नो इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर नहीं रहेगा। और एक चीज है, द मास इज ओनली लीविंग, नो आई इनलेट, इनलेट इज जीरो, इनलेट इज जीरो। आया या नहीं आया सर? वंडरफुल 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 वंडरफुल। अब देखो, यहां से आगे बढ़ेंगे हम, कदम कदम बढ़ाएंगे, कदम कदम बढ़ाएंगे। ओके, लुक एट दिस, ds by dt क्लैरिटी आ गया सर, 200% आ गया सर। स्टॉप, 200% आ गया सर। अभी क्लैरिटी लाऊंगा सर। माइनस माइनस एसी एसी, नाउ आई वांट m डॉट ई। देखो, माइनस को माइनस लिखे, एसी को एसी लिखे, माइनस m डॉट ई। ऑलरेडी यू नो m डॉट ई इज, कहां गया रे वो, m डॉट ई इज माइनस, देखो m डॉट ई इज माइनस dm बाई dt इन द कंट्रोल वॉल्यूम, माइनस माइनस AC AC, m dot E is minus dm by dt in the control volume. ठीक है सर। So ds by dt in the control volume is equal to entropy generation rate minus of minus plus dm by dt। खतरनाक क्वेश्चन है सर, in the control volume into AC। Understood sir? Now you integrate this sir, integrate. So this will be S2 minus S1 in the control volume। इंटीग्रेट करो सर, इंटीग्रेट करो। सो यू इंटीग्रेट, चलो चलो कोई बात नहीं सर, नहीं 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 नहीं, पहले आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। नाउ लेट अस इंड, दिस इज बाई टाइम, डॉट है बाई टाइम, बाई टाइम, आई रिपीट बाई टाइम, डॉट बाई टाइम, बाई टाइम। यू इंटीग्रेट विद टाइम तो टाइम निकल जाएगा सर, dt 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 निकल जाएगा, तो इट विल बी एंट्रोपी चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, डॉट निकल जाएगा, प्लस व्हाट विल बी दिस सर, SE into SE into what is delta m, so with respect to time निकल जाएगा, it will be delta m in the control volume। Please tell me if this is clear, I will proceed sir।
अगर आप लोग बोलेंगे ये सही है तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये निकल जाएगा, तो इट विल बी चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम। टाइम के साथ निकल गया तो टाइम के साथ निकल गया, चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है सर। अब यहां देखो, कैन आई राइट दिस एज M2S2 माइनस M1S1। इधर देखो, चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम, द चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम, द चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज S2, capital S2 minus capital S1. Capital S2 can be written as M2S2, so S1 can be written as this, should be equal to entropy generation plus SE into what is the change of mass in the control volume, final mass minus initial mass. Stop sirs, हो गया सर, क्वेश्चन हो गया सर। तो ही इज आस्किंग एंट्रोपी जनरेशन, तो क्या होगा सर, ये इधर देखो M2S2 माइनस M1S1, तो ये दोनों को इधर लेना, तो क्या हो जाएगा सर, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस इधर ले रहा हूं, सो आई एम कीपिंग ये उसी साइड रख रहा हूं सर, ये इसको इधर ला रहा हूं, इट विल बी SE इंटू M1 माइनस M2। इज इट करेक्ट सर? You have not understood. I have kept this that side only. तो M2S2 इधर, ये दोनों को इधर लाया सर, इसको इधर लाया, so minus will become plus. Okay, so the entropy generation will be equal to M2S2 minus M1S1 plus M1SE minus M2SE. Very good sir. Entropy generation is equal to M2 को कॉमन ले लो, S2 माइनस SE, S2 माइनस SE, और क्या ले लेंगे, माइनस M1 को कॉमन ले लो, S1 माइनस SE। इज देयर एनी डिफिकल्टी सर? गलत किया क्या सर मैं? M2 इज टेकन कॉमन, तो S2 माइनस SE, M1 इज माइनस M1 इज टेकन कॉमन, बिल्कुल सही है सर, करेक्ट। अब देखो सर, वेट वेट वेट, डू आई नो मास M2? यस सर। डू यू नो मास M1? यस सर। I do not know this. I do not know this. This is simply the entropy change for ideal gas. कहां से? E से S तक। आप आराम से देखो इसका इक्वेशन में कैसे लिखता हूं, हाउ टू राइट दिस इक्वेशन, एक बार देखो, देखो देखो क्या क्या पता है सर मुझे। आई थिंक द इनिशियल प्रेशर इज नोन, हाँ देखो ये वाला उठा लेंगे सर, हो गया सर प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हो गया सर, हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर? इधर देखो सर, लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है, वेट, यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी सर। दिस एंट्रोपी चेंज इज दिस, एंड व्हाट अबाउट दिस एंट्रोपी चेंज? कैन आई यूज दिस इक्वेशन? हाँ ये बिल्कुल सही है सर, P2 माइनस PE, E है, सही है। हाँ सिमिलरली व्हाट विल बी S1 माइनस SE, तो इट विल बी CPln अंडरस्टूड। लेट मी चेक एक बार, कुछ और डेटा दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या है सर ये? एक बार क्वेश्चन नंबर बताओ, एनीवन?
एक बार क्वेश्चन नंबर बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 20। लेट मी चेक वेदर एनी डेटा इज गिवन और यही है। एंट्रोपी 24 ना? आर यू श्योर? आर यू श्योर? 24, एक सेकंड। एम आई मिसिंग एनीथिंग? 18th है शायद। इज इट 18th और 24th? 24th। हो गया सर, हो गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, 100% सही है। राइट 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 राइट। फाइनल प्रेशर इज 200 गिवन ना? यस। वेट देर आई थिंक एग्जिट प्रेशर। वेट, वाह, वेट। मैं क्या देख रहा था आप बताइए सर? व्हाट वाज आई लुकिंग फॉर? I was just looking for any last sentence. Was there a variation of pressure with respect to time given in the question? I was checking for that. नहीं दिया। तो आप बताओ, the initial pressure is, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखना, the initial pressure is, understand carefully sir। प्रभुदत्ता आप कभी भी याद रखना, वॉल्यूम से मत जाना, ओनली वॉल्यूम से तभी जाना। आपको बताऊंगा सर, आपको बताऊंगा कि कितना धोखा है व्हेन आई गो टू मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा सर, बहुत धोखा है। तो वॉल्यूम तभी यूज कर लेना ओनली व्हेन इट इज अ रिजिड कंटेनर, व्हेन द मास इज नॉट चेंजिंग। व्हेन द मास, क्लोज्ड सिस्टम रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम्स पे जाओ। व्हेन द मास इज चेंजिंग, डोंट गो सर। नाउ यहां पे देखो सर, मेरे प्यारे परम पूजनीय विद्यार्थी, हो गया सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर? 330 केल्विन। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? 330 केल्विन। व्हाट इज द एग्जिट टेम्परेचर? देखो, इनसाइड द टैंक the fluid is kept at the same temperature. So when the valve is opened, with whatever the temperature is there in the tank, at the same temperature it leaves. So what will be the exit temperature sir? I repeat, when the valve is opened, प्रभुदत्ता दोबारा बता रहा हूं, you have to reduce volumes to a particular pressure and temperature conditions. तो therefore volume will change based on pressure and temperature. So इसलिए आप वॉल्यूम्स पे मत जाइए, धोखा खाएंगे। आपको क्लैरिटी से पढ़ाऊंगा, बिकॉज वॉल्यूम शुड बी रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग। ये बहुत धोखा है। सिर्फ आप टेम्परेचर प्रेशर पे ध्यान देना। दोबारा बता रहा हूं सर, आप बताइए, what is the temperature inside the tank? 330. So we are maintaining the temperature constant. So whatever the temperature of the fluid is there in the tank, at the same temperature it leaves. So exit is also 330. Now you tell me, what is happening to this term? T2TE. T2TE is same. So this will be 1. Log 1, 0. T1TE, देखो, T330/331, log 1, 0. So my equation for S2 minus SE will be equal to, ये ऐसा करेंगे, minus RLN P2/PE, and S1 minus SE is minus RLN P1/PE. अंडरस्टूड सर? तो अगर माइनस को अंदर लेता हूं तो S2 minus SE will be RLN PE/P. अगर मैं sorry S1 minus SE will be equal to, I'll take minus inside, R ln
This is if I take R inside PE by P2. If I take R inside, it will be PE by P1. Now the question is, I know the value of P2. The final pressure is given as, dekho sirs, the final pressure is given as 200 kilopascal and the initial pressure is 500 kilopascal. I do not have problem with P1, P2, but I do not know PE. Dekho sirs, when the gas is moving, don't conclude that as the pressure is as the temperature is same, pressure is same. No, they are independent properties. They are independent properties. The exit pressure is changing, sir. क्यों चेंज हो रहा है? तो इनिशियली द प्रेशर ऑफ द गैस इज 500. अगर एग्जिट प्रेशर चेंज नहीं होता, देन से सुनो, अगर कंटेनर के अंदर फ्लूइड का प्रेशर चेंज नहीं होता तो एग्जिट चेंज नहीं होता. बट यहां पे initially the pressure of the gas is 500. When the valve is open, the gas is leaking out, the final pressure is decreasing. Means here the pressure is changing. So don't take exit pressure as same. The exit pressure is changing, sir. क्या लेना है? Whenever the information is not given, अगर कोई information देता है तो you have to take that as the exit pressure. Whenever it is not given, you have to take the average. So therefore the exit pressure, I think one question I have done this. मैं एक question किया था. The average is 500 plus 200 by 2. It is 350. तो यहां पे समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चों को, समझ में नहीं आ रहा है सर. हो गया सर, कॉपी एंड हियर पेस्ट. ठीक है. नाउ हियर यू टेक दिस टू. Understood, sir? Understood, sir? Yes. So now I write, my students are not understanding, sir. Khatarnak questions kar rahe. So the exit pressure, you have to write that assumption in examination. But in GATE examination, he will give you very clearly, take the exit pressure as average. So nahi deta hai, so it is, we have to take, it is 500 plus 200 by 2, which is 350. So put karo, sir. S2 minus SE is equal to R is 0.287 ln. The exit pressure is 350 and final pressure is 200. देखो P2 is 200 and यहाँ पे S1 minus SE is equal to R is 0.287 into ln. The exit pressure is 350 and the initial pressure is 300. So please give me the values of these two. फटाफट दीजिए sir. We have to close, sir. अरे यार क्या बच्चे है रे. Put it here. So the entropy generation is M2. I think already I know M2. What is M2, sir? What is M2? 10.56. S2 minus SE. S2 minus SE is 0.16061. M1. What is M1, sir? M1. 26.396. S1 minus SE minus 0.102366. So what is the entropy generation? Wow, 4.394. I don't know whether it is there or not. Yes, 4.394. क्या खतरनाक क्वेश्चन किए. इस क्वेश्चन को तो तालियां बनते हैं सर. इस क्वेश्चन को तो तालियां बनते हैं सर. What a beautiful question. Now you have gained confidence, sir. Unfortunately, no one is appreciating this question, sir. Seriously. Okay. So tomorrow we are starting the new chapter. And have you solved questions on SFD, BMD, whatever I have given yesterday?
चलो फिर आज के लिए बस इतना. So we'll meet in the evening for some new chapter, theory of pure bending. Okay, chalo, bye bye, thank you, bye bye. Some more tough questions will be done once we pure. Don't think that entropy is over. So I'll start the new chapter, but entropy questions will be taken up again once we complete pure substances. Okay, right. Bye bye.